So if she could share the story with all of you. So please give a round of applause for Eva. Who is your inspiration in YouTube and वैसे in real life? YouTube में वो नीगा William Johnson, Avaz Lovely, पता नहीं कौन. Like who was your inspiration as a YouTuber and वैसे भी जिंदगी में who is your inspiration? This might come off as a वैसी बड़ा शोधा है शोखा हो रहा है, but I don't have an inspiration. I don't have an inspiration because मैं जो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो अभी तक मतलब मैंने YouTube start करने से पहले सारों का काम consume कर लिया था. Not because I wanted to copy them, because ताकि मुझे पता चल जाए कि this has already happened and now I have to raise the bar. I don't want to do the exact same thing. So that's why I don't have an inspiration. But I do get feedback from these amazing guys who sit in front of you. और ये लोग जो मुझे feedback देते हैं वो एक चीज़ पे जो है मतलब मुझे याद है आप लोग भी स्पेशल हैं। पहले 10 vlogs में जो है ना इन्होंने आवाज़ पे इतनी कंप्लेन की थी कि मुझे अपनी किडनी बेच के ये कैमरा लेना पड़ा और now अब साउंड की कोई कंप्लेन नहीं है। So I don't have an inspiration. I just take feedback from you guys. I build on that. Who's your favorite personality YouTube में और real life? Favorite personality? Favorite personality would be Muru. Yeah. शुरू करते हैं ना आप जब ब्लॉग से कुछ भी शुरू करते हो और आपके लीड में कुछ आता है और आप अगर पहले ही होते क्या इसको दबा दो इसको ऊपर नहीं आने दो कि मैं इस वक्त बादशाह हूँ शहनशाह हूँ ठीक है ना फुल ऑन ब्लॉगिंग मेरी एनएसटी है और कोई नहीं है इसमें बट मूरू इज द ओनली वन जो कि उसने इरफान जुनेजो को भी उसने जो है ना एक प्लेटफॉर्म दिया वो आया ऊपर नाम सी इरफान जुनेजो कहाँ पे ही इज एन एनेबलर व्हेन यू सी me मेरे 3,000 followers then he called me up he's like यार चल हमारा पूरा ब्लॉग है and it was sponsored the vlog was sponsored गुंजा ब्लॉग भी आप लोग देखा हो that's the sort of guy Muru is and that's why he is my favorite personality so because उसके साथ conversation शुरू होती है ना आप लोगों को मैं voice notes नहीं पढ़ा सकता आपको पता है मैं मुरू बाजी का ह्यूमर आप voice notes में आपको पढ़ाऊँ ना तो यहाँ पे बढ़िया you get the idea what's that one weirdest voice note that Muru has sent you जो आप share कर सकते हैं What do you say, yaar? What do you say? Monu, well, बहुत खतरनाक मतलब एक भी मैं उसमें से नहीं निकाल पा रहा एक अच्छा जैसी वो मतलब वॉइस नोट आते से आए थे वो कैसे सेक्सी उखानो उसके बाद आगे फिर पता है जब सेक्सी से स्टार्ट होता है तो फिर खत्म का होता है वो पता है पर या हमारा काफी इंटीमेट रिलेशनशिप है सवाल पूछते यहाँ पे लगा हुआ कि वो नहीं होगी क्या बातें होगी सवाल पूछो Even the same question for you. Who's your favorite personality? I think I'm the same. You know, I don't have. I mean, inspiration, favorite personality. There's a whole bunch of people actually that I have tremendous respect for and who inspire me in very different ways. So I don't think there's one single person who I sort of look up to as like, you know, this person's perfect at everything. But there are people like, you know, Zina Irfan. She's actually from here. She's the first Pakistani woman to have motorbike across the north of Pakistan. Then there is a girl called Anita Jalil-Baloch. She's the first female blogger in Guyana. And so, you know, those girls for me are like pioneers and groundbreakers. So I look up to them for courage, for, you know, just sort of strength, I suppose. And then there are so many people on YouTube that have so much talent, you know, in terms of cinematography. There's too many to name, but you type in, you know, some keywords related to Pakistan and you get so many YouTubers. And some of them come from very famous bloggers like Muru. Others come from undiscovered talent. So that's amazing to see. And then, you know, there's a lot of different dimensions in what we do. There's, of course, the video game, but there's also things like photography. There's things like caption writing or text or storytelling. So for
all those different things. I mean, I just sort of like go to different people. I go to books, I go to comics, I go to videographers, and I sort of try and mash them together into something that makes sense to me and hopefully to you guys as well. Hopefully. What's your favorite fan experience? Like, has there been a fan moment with you? Like, so एक fan हमेशा जो याद रहता है इंसान को. अच्छा, मुझे सारों की शक्लें याद रहती हैं और मेरे सारे फेवरेट हैं. मेरा कोई एक फेवरेट नहीं है, सारे फेवरेट बस हर कोई जब आता है ना तो कोई ना कोई मजेदार चुटकुला छोड़ के चला कि इन नो कि मुझे मस्तियाँ पसंद है. एक थोड़ा एक्सट्रीम में चला गया था कि वो कोप पे उसे चुम लेने की कोशिश की थी. शुगर का अदा करा था मेरी क्लीन शीट की. But all of them are my favorite because they come with such good feedback. जैसे कि मेरा काम उनका अपना काम है, वो मुझे बताते हैं उखानो भाई देखें आपका जो वो शॉट है ना, इंट्रो ना डाला करें, आपका गाने कमाल होते हैं लेकिन इंग्लिश गाने तो ना इस्तेमाल किया करें. मैं क्या कोक स्टूडियो वाले कॉपीराइटेड है वरना सारे कोक स्टूडियो. So I love the interaction and I have all of them are favorite and मेरा कोई एक नहीं है. What is happiness to you? Happiness to me, yeah, I can't really कोई adjective या कोई एक word नहीं है उसके लिए happiness for me, but just doing what I do on a daily basis or doing it and sharing it with you guys, keep on doing it and level ऊपर जाता जाए और काम improve होता जाए, that's happiness for me. But I don't think कि उसको आप वो कर सकते हो. But जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने अपने notes में लिखा हुआ है कि मेरी happiness क्या है, that would be कि to max out my true potential, true creative potential, which will never happen. So that is happiness for me. The same question. Honestly, I thought this was like a vlogging talk and not a philosophical debate. What is happiness? What is happiness? So answering your first question, excellence or happiness? Always happiness, 100%. You know, I think pursuing excellence, there is a relationship between the two. But it has to be pursuing excellence in something that you love and something that makes you happy. So if you are making yourself better and that process makes you happy and you feel that you're growing, then oftentimes that can lead you to being, you know, to happiness. At the same time, with vlogging and with social media especially, it's very easy to get lost in that. And it's very easy to sort of start doing things for likes, which is never a good idea. It's easy to start maybe, you know, mirroring other people, copying other people, or letting yourself be too influenced by other people. Just choose happiness, and if you feel that you're stumbling, or if you feel that maybe you're not being true to yourself, then you know, take a bit of time, reflect, and start fresh. If we're to get into travel vlogging, so my question for you is, when you go to a place, for example, if you go to a new place, do you guys do your research first, or do you want it to be spontaneous? क्या मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा किस तरह होता है, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा उसके लिए. मैं बिल्कुल रिसर्च नहीं करता. मेरा अभी तक मुझे नहीं पता था कि यार असल में ये लोग स्टोरी बनाते हैं, प्री प्लॉट वगैरह. मेरा उधर जाके स्पॉन्टेनियसली मैं जो जो आ रहा था, शूट कर रहा था, उससे बात बन जाती है. ज़्यादा से ज़्यादा उधर जाके, अभी तक जो मेरे साथ बेस्ट चीज़ ये हुई, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई सीनियर किया. मतलब मैं मूल के साथ बहुत 2 बार ट्रैवल किया है, तो वो एरियाज मैंने कवर कर ली. जब मैं चित्राल भी अभी गया, मेरे साथ सीनियर्स थे तो उन्होंने मुझे बता दिया था. सो फार मैंने कोई रिसर्च वगैरह कभी नहीं की, विच इज़ बैड. यू शुड गो विद रिसर्च. बट मेरे पास उधर जाके मैं फिर इतना हाइपर हो जाता था कि कुछ ना कुछ हाथ आ ही जाता था. सो आई बीन लकी दैट वन. बट आई हैवंट डन एनी रिसर्च व्हेन इट कम्स टू ब्लॉगिंग. पूरी चीज़ पे विकिपीडिया. We're like the exact opposite in this regard because yeah, you're very spontaneous, which you can see in your vlogs. You know, you're very fun out there, and everything's happening in the moment. I think that's like a huge part of the charm. How long does it take for you to edit one vlog on average? Like एक vlog आप कितनी जल्दी edit कर लेते हैं? One vlog. मैं बार मैं मुलू दिल्ली जा रहा हूँ अपने टॉप में, बट असल में हुआ है इस तरह ही है. मैं अभी कराची में 2 हफ्ते ठहरा हुआ था, मेरे से ब्लॉग नहीं एडिट हो रहे थे. चित्राल से आए हुए मुझे महीना हो गया था, ब्लॉग्स नहीं एडिट हो रहे थे. एंड इट टुक मी व्हेन आई सैट विद हिम, ही वाज आल्सो डूइंग अ चित्राल ब्लॉग, एडिट कर रहा था, मैं भी कर रहा था. टुक अस बोथ 24 आवर्स स्ट्रेट. वाज इट वन सेशन? एक ही सेशन में हमने 24 घंटे में लगातार किया है. मैं आया हूँ, मैंने एडिट दिखाया मुझे, यार उखानो तूने पेल दी.
तूने पेल तू एडिट नहीं करा, तूने पेल दिया इसमें नजर आ रहे गैप से इतनी ज़्यादा एडिट हो सकती है, एंड देन सैट ऑन इट अगेन, एडिटेड इट अगेन, उसको फिर ठीक किया, फिर मैंने दिखाया कि अब सही हुआ, कितने हाँ सही हो गया, लेकिन देखो इस तरह देन ही शेयर्ड सम टिप्स भी याद है कुछ में जो डायलॉग्स जो है ना उसने अभी भी इंटरव्यू किया था कि अब उसको समझ आ गई डायलॉग्स कैसे जोड़ते हैं, तो हम आपस में हमारी लगी रहती है कि यार किस तरह से उसको इम्प्रूव करते हैं और किस तरह से, तो वो टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है ब्लॉग में कि अभी मुझे 4 ब्लॉग घर जाके एडिट करने, एक वो फ्रेश का है, एक पोर्श का है, एक सोनम कपूर का ब्लॉग है, एक और कौन सा है, एक ये वाला ब्लॉग है, एक अभी सुबह हमने लाहौर में शूट किया है, सो मुझे नहीं पता 2 दिन में क्या चल रहा है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफ यू आर विलिंग टू पुट इन दैट मच वर्क देन यू ब्लॉगर वरना बना करो कोई डे जॉब कर लो ऐसा What वैसा। about you, Vibha? How long does it take for you to edit? It takes a long time. I can't sit still, so it's really difficult for me to like sit there in front of the screen and actually like edit stuff. So it takes me like, and I don't know, like days to edit a single vlog. But it depends on what you do, I guess, and what you want your focus to be. So if any of you guys are thinking of starting a vlog, and then consider obviously your interests, and consider about how many vlogs should I be doing a week. There is no rule. It all depends on what you do, and it all depends on how much time you can put in. So for example, I would imagine that things like maybe beauty vlogs, you know, like makeup, maybe they are a little bit less time consuming, because obviously you have to rehearse it beforehand, you have to prepare yourself as you do with any vlog. But the process of shooting it is much faster, right? It's maybe an hour, maybe 2 hours. And then the process of cutting it together is also faster because you've got a very clear, like, chronological progression. There is, I mean, it's more of a how-to, more of a instruction. And this goes for a lot of other types of vlogs. With travel vlogging, the difficulty is that you really have to decide on your story. And then you have to decide, am I going to show it chronologically? Am I going to make it a bit more dramatic? Put something at the beginning? Am I going to end it? It has to be a bit more, it's like a micro notes in its own right. So these, I mean, for me, travel vlogs are like ridiculously time consuming. And this is why, you know, I often get asked, why don't you make more vlogs? You only make maybe 1 week, maybe 1 or 2 weeks. And it's because of that, it's because they just really do take ages A, to shoot, and B, to edit in a way that kind of makes sense and that conveys the experience itself. That's definitely not easy to do. But if you have a minute, वो start जो video play की दोबारा play करते हैं इसमें फिर आपको बता दूँ कि आप मुझे बताएं कि इस पे कितना टाइम लगा है, then you understand. फिर play that video again. एक बंदा बता रहे कितना टाइम लगा? ये 1 मिनट का क्लिप है, इस पे 6 घंटे लगे थे मुझे, और मैंने सुबह 6 बजे ये रेंडर निकाला है विद फ्लू सो दैट आई कैन प्रेजेंट इट टू यू गाइस 26 hours. इवन मिनट क्लिप इतना टाइम लेते हैं कि आपने 1 मिनट में इतनी एनर्जी पैक करनी है कि वो फिर आपके बात खड़े हो देखते हुए हार्ट बीट तेज हो, वो आपकी फीलिंग इवोक कर रही है. So it's not that easy कि यार कैमरा उठाया और डाल दिया. You have to then connect with the audience to that feeling. और वो आपने एडिट में 6 घंटे 24 घंटे या पूरे राउंड द क्लॉक डालना होगा. And that's sort of commitment you need at the end of the day. Following up on that question, इतना कुछ आप लोगों के पास करने को होता है, आपने फिल्म्स पे भी जाने को, स्टूडियो पे भी जाने, कैट के जूते भी पहने हैं, तो मतलब मुझे आप बताएं, how do you
How do ये you बंदा कैट वालों की तरफ से है, कोई 4 बार बोल चुका है तुझे जो पैसे मिले सबको खाना खिलाए इसके, इन सबको खाना खिलाए। सर आपको खिलाना चाहिए जितने आप पैसे बचाते हो जूतों पर। अच्छा, how do you guys manage the deadlines? क्योंकि इतनी ज़्यादा आप लोगों के पास projects होते हैं, how do you guys manage the deadlines? I'm the worst example when it comes to managing deadlines, because मैं गलती से 2 ब्रांड्स को एक डेट पे दे देता हूँ, और ये हुआ है मेरे साथ। अगर यहाँ पेप्सी कोक का कोई बैठा है तो I'm sorry, because मैंने पेप्सी और कोक को एक डेट दे दी and I worked with both of them, और दोनों competitive brands हैं, और मेरी दोनों में लड़ाई चल रही है। लेकिन देखा कैट को अलग डेट दी है। तो वो डेडलाइंस मीट करने में मैं बहुत बुरा हूँ। आई एम लाइक ऑर्गेनाइज्ड chaos, मुझे पता है कि मैंने कहाँ पहुँचना है, वो कैसे पहुँचना है मुझे नहीं पता। मैं अभी यहाँ आने से पहले भी मैं मरूद के घर सोया हुआ था, क्योंकि मैंने कल रात तक एडिटिंग कर रहा था, जुकाम था मुझे। यहाँ आते हुए झूठ बोली जा रहा हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, आखिर में एग्जैक्ट 2:30 एंटर हुआ हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू मीटिंग डेडलाइंस और कमिटमेंट्स और इस तरह की चीज़ें जो कि ऑन पेपर होती है, ईमेल्स वगैरह, प्रेजेंटेशन, मेरी बहुत बुरी है। आई थिंक एवा इज अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ दैट। अगर बच्चों को सीखना है तो एवा ठीक है। We're so different in so many ways, but somehow it works. Somehow, yes, maybe. No, not like that. Come back this way. I'm kidding, of course. Anyway, yes, so we are very different in that way. I never really have a problem with deadlines because I impose them myself, and sort of realistically, I know, okay, I have a day off here, so I know that I can spend X hours editing or doing something. So for me, it's more about like knowing yourself and what your capacity is, and like, you know, for example, I know that I can't do like voiceovers for videos in the morning. I can only do them like late afternoon, but not in the evening. And I can only start editing in the morning, but I can't edit in the sort of afternoon because then I get too distracted. So like knowing yourself and how you work is really helpful. And that way, if you have the ability, which you usually do, to say, okay, I can hand this project in 2 weeks, you shouldn't have a problem. But yeah, but it can be difficult. Sometimes I also just like, what? What are you gonna say? No. What are you gonna say? मेरा इतना बुरा डेडलाइंस और ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का कि मैं अभी मर्च लॉन्च भी नहीं किया, अभी सिर्फ टेस्ट कर रहा था। सो मैंने कहा चलो ये यूखानो वाली डोमेन खरीद लेते हैं। किसी इमरान मुर्तज़ा ने पहले 2 महीने खरीद ली थी डोमेन, सो मेरे पास अपनी डोमेन भी नहीं है। दैट्स हाउ बैड आई एम एट ऑर्गेनाइजिंग माय स्टफ। सो अगर किसी और ने डोमेन खरीदी पहले मैंने खरीद लो, मेरी तो कोई ले गया। चलो ब्लॉग्स की बात होगी, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। कैन यू गाइस शेयर योर फेवरेट मूवी डायलॉग? फेवरेट मूवी डायलॉग एंड और डांस स्टेप। उमर भाई आपकी तरफ थोड़ा सा। I'm gonna have to Google this. Give me a minute. Huge round of applause for Eva, please. उनको थोड़ा सा This is like extremely cliche, probably, but I think maybe some of you recognize this. Frankly, my dear, I don't give a damn. त्रिवेदी बन जाएगा। I know for a fact कि आप लोग टंकी से हैं, तो I think the audience wants to see you do a performance. Can you? We need to see that talent over here, please. Yeah. No, yaar, please. कुछ भी, any scared, anything, you know, do a character or something. There are characters. What was your favorite character? मैं खुद scared था, पता है। फेवरेट कैरेक्टर जो था, Glitters present us in speaks. फेवरेट मैंने एक कैरेक्टर किया था और वो भी GIK में
सब पठानों के सामने और मैं आइटम गर्ल बना ऐसा वैसा नहीं, लंबे बाल, क्लीन शेव, फुल वैक्स, चोली और घघरे में। वो वीडियोस जो है ना मैंने दफन की नहीं, क्योंकि वो कहीं किसी के हाथ लग गई तो मेरा करियर शायद बूम कर जाए बहुत ऊपर चला जाए। बट डांस के लिए करना चाहिए होगा कुछ, मतलब इस तरह तो मैं नहीं कर सकता। लीड प्ले सॉन्ग प्ले हो सकता है शर्मा भाई बीटबॉक्सिंग करेंगे। कौन सा गाना है आपके पास? सारे कोई भी लगा रहा है कोई कौन सा गाना है? दिल पर लगा अकेले नहीं करूँगा, सब खड़े होंगे, मैं एक स्टेप करके दिखाऊंगा, सारे के सारे करूँगा। मैं उस टुकड़े वाला स्टेप करूँगा, सारी वीडियो बना रहे हैं वायरल हो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने माशाल्लाह बहुत लंबे बाल रखे हुए हैं, तो कभी इनमें जुएं तो नहीं पड़ गई? सबसे पहले बात तो मैंने आपकी ना वीडियो में काफ़ी हॉलीवुड का टाइप देखा है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं? या ये बात में कोई वही शायद वही पड़ जाए बाद में, पर मैं नाम ही लूँगा। बट पेशावर के बारे में काफ़ी बुरे इस बारे में आजकल में जो है काफ़ी नेगेटिव डॉक्यूमेंट्री जा चुकी है। एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने उसी वजह से स्टार्ट की थी कि मैं खुद ट्राइबल एरिया से हूँ, मैं किसी से तालिबान नहीं करता, मैं कोई इस तरह हरकत नहीं करता जहाँ से पठानों या पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हो। तो मेरा जो एम था कि यार इतनी ज़्यादा टेंशन है सबकी लाइफ में, ये तो खत्म करना थ्रू एंटरटेनमेंट। बी ये कि यार इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाओ अबाउट द ट्राइबल रीजन और अबाउट पाकिस्तान दैट यू कैन पिच टू ऑस्कर टू मेक द कैन फेस्टिवल, क्योंकि उधर की बात चल रही है। तो मेरा ये है कि मैं उधर जाकर प्रेजेंट हूँ आप लोगों को, और मैं आप लोगों का जो काम है मुझे मेरी आपके साथ इस तरह कनेक्शन कि आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। आई टेक दैट देयर एंड प्रेजेंट यू गाइस, दैट्स माय गोल इन लाइफ। I want to ask a question. मैं भी ट्रैवल काफ़ी करता रहा हूँ, मैं बहुत सारे पख्तूनों में भी रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह क्योंकि मैं जो आपने पख्तूनों के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, वाकई खुशी हूँ, खुश हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। मैं पख्तून में रहा हूँ, पख्तून में मेरे साथी थे और आइए। अच्छा, अब जो मेन क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये था कि आप अभी तक बैठे हैं, जो भी लोग हैं आपके सामने और आपके साथ काम किया, अभी भी आप उनको अच्छे लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल का जो ब्लॉगर्स है वो पहले सारे कलेक्ट करके सारे इकट्ठे काम करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे को देखना भी वाला नहीं करते। क्यों ये ऐसा क्यों है? मैं वजह बताता हूँ, इससे वजह बताता हूँ। रिसेंटली मैं किसी के साथ काम कर रहा था, मैं नाम ही लूँगा, नेगेटिव लोगों को नहीं मैं वो करता, बट उसको मैं हेल्प आउट कर रहा था। एंड देन उन्होंने एक बात कही कि यार जब हम यूट्यूब पे आ जाएंगे तो तुम लोग ब्लॉगर से चीज़ ऑफ हो जाएगी, हमारी प्रोडक्शन लेवल कितनी है। उनको मैंने उसी वक्त स्पॉन्टेनियस इसलिए जवाब दिया था कि बड़े इनसिक्योर लोग इस तरह की बात करते हैं, जो लोग अपने क्राफ्ट में उनकी तरह से पे बिलीफ होते हैं, वो औरों को जो है ना ऊपर उठाते हैं, लोगों को दबाएं। सो वी डोंट हैव एनी मैं सारों का काम देखता हूँ, आई वॉच अब्दुल्ला फटक, आई वॉच ऑल द टाइनी यूट्यूबर्स जो हैं टाइनी यार भाई देख लो मेरे बारे में कुछ भी नॉर्मल है।
कुछ भी नहीं है, मैं तो उनके साथ जाके वो लोग खुद हंस पड़ते हैं मुझे देखकर। जब आपने बंदे को हंसा दिया, आपका काम हंसाना है, आपने वैसे उसको हंसाना है, बिकॉज आप उसको कैमरे में डाल रहे हो और आप उससे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हो, आप उसको चाहे तो अपनी जिंदगी स्टोरी बताओ। जब आप अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते हो उसको, तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट ना करें आपको कुछ दे। यू हैव टू गो ऑल इन, आपको फिर मान पड़े कुछ भी हो, लेकिन तमीज के दायरे में इजाजत देंगे। दैट्स ऑल आई